Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, S.P.C. Govt College, Ajmer. बच्चों, मेरे आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को दी प्रोकैरियोटा और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, शेप, साइज के बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स आर ऑल्सो एब्सेंट। ये वाले सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम जो है वो 70S यूनिट के होते हैं एंड दे आर डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरिड आउट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लैक स्टीरॉल्स, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी स्टीरॉल्स नहीं पाए जाते। अब हम देखते हैं साइज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल कि कैसा साइज होता है। एवरेज साइज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. Size ranges in nano and ultra micrometers as well. Now we come to the shape of the बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितनी तरह की शेप के होते हैं। देखिए बच्चों, वैसे बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली वो कोकाए होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, और विब्रियन, स्पाइरालिस, स्पाइरोचीट्स एंड माइकोप्लाज्म, इतनी शेप के बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोकाए, जिसको हम सिंगुलर बोलते हैं कोकस। कोकाए जो होते हैं this name derived from cuckoos meaning berry. They are spherical or nearly spherical, गोल होते हैं। Bacillus bacteria, bacillus is from baculus meaning rod. Bacillus means rod like bacteria. Rod like bacteria or bacilli are relatively straight cylindrical cells. In some of the bacilli the length of the cell may be equal to width, जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। Such bacillary forms are known as कोकोबेसिलाई। जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है उनको हम बोलते हैं कोकोबेसिलाई। नेक्स्ट टाइप के बैक्टीरिया हैं जिनको हम बोलते हैं विब्रियंस। विब्रियंस आर कर्व्ड और कॉमा शेप रॉड्स। Next type of bacteria is Spiralis. Spiralis bacteria, they are rigid or helical forms. Spirochetes bacteria. Spirochetes is derived from spirea meaning coil and chete means hair. They are flexus spiral forms. Next come to the mycoplasma. Mycoplasma are सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया, जिनके अंदर कोशिका वॉल नहीं पाई जाती एंड हेंस डू नॉट पजेस अ स्टेबल मॉर्फोलॉजी। इसलिए क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो इनकी कोई स्टेबल मॉर्फोलॉजी, स्थायी आकारिकी नहीं होती। Here in this picture you can see various shapes of the bacteria: cocci, Cocobacillus, Vibrio, Bacillus, Spirulum and Spirochete. Next we will see the arrangement of the bacterial cells. Pathogenic bacterial species appears as sphere. जो रोग कारक स्पीशीज होती हैं बैक्टीरिया की वो कोकाए होती हैं और रॉड शेप होती हैं या स्पाइरल होती हैं। Bacteria sometimes show characteristic cellular arrangement or grouping. The type of cellular arrangement is determined by the plane through which binary fission takes place, by the tendency of the daughter cell to remain attached even after division. Next we will see the arrangement of the cocci. On the arrangement of the cocci, you will see types of bacteria: Diplococci, Diplococcus bacteria,
Cocci may be arranged in pairs. Di means two, when the coccus may be arranged in pairs, when cocci divide and remain together. For example, pneumococci, gonococci, etc. Secondly, long chains. Long chains when cell adhere after repeated division in one plane. जब चेन्स के अंदर राउंड राउंड पूरे बैक्टीरिया जुड़े हुए होते हैं तो उनको हम बोलते हैं लॉन्ग चेन्स कोकाई. इसके उदाहरण हैं आपके स्ट्रेप्टोकोकस, एंटेरोकोकस एंड लैक्टोकोकस. थर्डली कोकाई अरेंजमेंट है ग्रेप लाइक क्लस्टर्स. ऐसे कोकाई जिनके अंदर अंगूर के गुच्छों के रूप में क्लस्टर्स और राउंड्स पाए जाते हैं. व्हेन कोकाई डिवाइड्स इन रैंडम प्लेन, फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस. फोर्थ arrangement of the cocci is tetrad. Tetrad means four. Square groups of four cells when cocci divide in two planes. For example, micrococcus. Next one is the cubical packets. Cubical packets of 8 cells when cocci divide in 3 planes. For example, Sarcina. Now, the arrangement of the bacilli or the rod-like bacteria. Bacilli splits only across their short axis. Therefore, the pattern formed by them are limited. They are chains, for example, streptobacillus, and number 2 is the other are arranged at various angles to each other, resembling the letter of V, presenting a cuneiform or Chinese letter. For example, Corynebacterium diphtheri. Here in this picture, you can see the morphology of bacteria like Diplococcus, cocci in chains, cocci in cluster, tetrad 4 के groups में, large cocci in regular bigger packets of 8, bacilli and cocobacilli, bacillus in chain, and common comma shape and Chinese letter shape bacteria. Now we come to the structure of bacteria or the cell organization of bacteria. Living cells of all kinds have 3 things in common: wall or covering envelope, cytoplasm and nuclear material, each making its own contribution to the life of cell. So in this picture, if we'll start the structure of bacteria, you can see the cell envelopes. What are the cell envelopes? The outer part of the bacterial cell, which is made up of 3 definite demonstrable structure. अगर हम cell envelopes देखें तो 2 तरह के cell envelopes हैं. जो बाहर वाला slime layer है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल, और अंदर फिर उसके फर्दर सेल जैसे कि तुम देख रहे हो बाहर वाला कैप्सूल है, इसको हम स्लाइम लेयर भी बोलते हैं. सेकंड सेल एनवेलप है नंबर 1 साइटोप्लाज्मिक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल विच इज द आउटर मेम्ब्रेन. सो कैप्सूल, देन सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. स्लाइम लेयर की अगर हम बात करेंगे तो स्लाइम लेयर जो होती है इट इज अ जेली लाइक लेयर ऑफ लो ऑप्टिकल डेंसिटी. इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है एंड इट सराउंड्स मोस्ट बैक्टीरिया एंड मे वेरी इन थिकनेस even in different cells of the same culture. When it becomes sufficient thick and firm, it is termed as capsule. जब ये टाइट हो जाती है तो उसको हम कैप्सूल कहते हैं. As a rule, this material has a very low affinity for dyes and it is necessary to employ a suitable mordant or special technique with the electron microscope in order to see distinctly or study a capsule. अगर हम इस कैप्सूल का केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये जो कैप्सूल है इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, बट इन सम टाइम्स इट इज आल्सो मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. Most bacterial polysaccharides contain more than one type of sugar and they are heteropolysaccharides. Pseudomonas bacterium secretes a heteropolysaccharide capsule which is consisting of D-glucose, D-galactose
D mannose, D glucuronic acid, and L rambose residues. In the pneumococci, the capsule is made up of hexose, ionic acid, and amino sugars. In streptococci, the protein capsule consists of L amino acids, and in bacillus anthracis, the polypeptide in the capsule contain D glutamic acid. ये कैप्सूल भी जो है वो दो तरह का कैटेगरीज का होता है, एक तो मैक्रो कैप्सूल्स होते हैं, दूसरे माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं. तो मैक्रो कैप्सूल्स जो हैं वो दे आर एटलीस्ट 0.2 म्यू थिक and they may be seen under a compound light microscope. और दूसरी तरह के कैप्सूल जो कि माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं, they are extremely thin and they cannot be demonstrated under light microscope. So we can visualize them in electron microscope. Now what is the function of the slime layer? ये बाहर कैप्सूल या स्लाइम लेयर है, इसके क्या क्या फंक्शन है? It protects the cell from drying, सूखने से बचाती है. It may also protect the bacteria from the normal body defense against invasion. Bacterial from the normal body defense invasion. It functions as a strong site for food substance. And number 4, it usually has an ion exchange capacity which may aid in uptake of essential cations. Bacterial capsules are species specific and can therefore be used for immunological distinction of closely related species. Next हम देखते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी इसके अंदर क्या है, सेल वॉल है और plasma membrane है. The cytoplasmic membrane surrounds the cytoplasm and shrinks within the material during plasmolysis. Next is the inside. You can see inside the cytoplasm you can see various type of DNA coiled into nucleoid. There are cytoplasmic inclusions and plasmid, cytoplasm, and ribosomes of 70S ribosomes. And outside you can see the flagella or the long hair-like structure. They are termed as flagellum. So this is all about the structure of bacteria. In our next class we'll be talking about another characters of bacteria. Thank you.